So hello everyone, welcome to my YouTube channel AB Classes. So let's start a new topic in ray optics, that is the refraction through prism. This lecture include the discussion on what is prism, what are the various parameters like angle of prism, reflecting age, reflecting phases, and further we will also discuss about the angle of deviation, angle of minimum deviation, dispersion of light. So stay throughout this lecture, subscribe and share my channel. Okay, so let's start. See, prism is a sharp wedge portion of transparent refracting medium which incline each other at certain angle, which is called angle of prism. See, this is the diagram. This ABEF is one face, this ACDF is another face. These are called reflecting faces which incline each other at certain angle, which is called angle of prism. And this edge which join these two refracting surfaces called refracting edge. Okay, now we take out this front portion of this prism in order to study the refraction of light through prism. Okay, see, this is the front portion of that prism. Let's suppose this is the incident light which incident on this interface AB. It get refracted and again it strike another interface, that is AC. It again get reflected out. Okay, this is called emergent ray, this is called incident ray, and this is called what? Refracted ray. This is the angle of incidence, angle of reflection for phase AB, angle of incidence, angle of reflection for phase AC. Okay, now we can see that in triangle Q and R, in triangle Q and R, what is the value of this angle? Angle Q and R is equal to 180 degree minus R plus R dash. Okay, this angle is this, and we can see that this is normal to the surface AB and AC. Okay, so this is 90 degree and this is 90 degree, and AQNR is a quadrilateral in which this angle are 90 degree, so the sum of angle this and this are also 180 degree. Okay, so in quadrilateral AQNR, angle QNR plus angle QAR is equal to what? 180 degree. So this angle is this 180 degree minus R plus R dash plus angle A is equal to 180 degree. This is cancel out. So A is what? R plus R dash. So this is the relation of angle of prism with these two angles R and R dash. Okay. Now see, this is the emergent ray and this is the incident ray. जब आप इस इंसिडेंट रे को आगे प्रोड्यूस करोगे और इस इमरजेंट रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करोगे, ये एक दूसरे को एक पॉइंट पे मीट करेंगे जहां पे एक एंगल बनेगा. उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. मीन्स वो पर्टिकुलर इंसिडेंट रे प्रिज्म से जब पास हो रहा है तो किस एंगल पे डेविएट हो रहा है, मीन्स जो इमरजेंट रे है वो कितने एंगल पे बाहर आ रही है इंसिडेंट रे के कंपेरिजन में. ठीक है, तो ये होता है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन. याद रखना, एंगल ऑफ डेविएशन किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए फिक्स होता है. अगर इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ आप चेंज करोगे तो उसका डेविएशन चेंज हो जाता है. ठीक है, वो हम रिलेशन अभी निकालेंगे कि क्या रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एंगल ऑफ डेविएशन के साथ. तो हम ये चीज फाइंड आउट कर ले कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा इस एंगल ऑफ डेविएशन का. ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन. इसका एक नाम दे दो P. यहाँ ध्यान दो, PQR एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल मैं यहाँ बना दे रहा हूँ. ये एक ट्रायंगल बन रहा है PQR. ठीक है, और ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन हो रहा है डेल्टा. ठीक है, ठीक है. ये बताओ, ये एंगल अगर R है तो ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा, दैट इज ये एंगल कितना होगा I माइनस R.
और ये कितना हो जाएगा आई डैश माइनस आर। तो ये एंगल जो एंगल ऑफ डेविएशन है किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों के सम के बराबर। ठीक है, सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर डेल्टा इज व्हाट, आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। सी आर प्लस आर डैश इज व्हाट, एंगल ऑफ प्रिज्म। सो डेल्टा इज व्हाट, आई प्लस आई डैश minus a. So delta plus a is what, I plus I dash. So this is the relation of angle of deviation, that is the sum of angle of deviation and the angle of prism is equal to angle of incidence and angle of emergent. Okay, now next discussion is on how this angle of deviation vary with this angle of incidence. Okay, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर दें, ये हमारे पास दो रिलेशंस हैं, याद रखिए, a is equal to r plus r dash and delta plus a is equal to what, I plus I dash. ओके, अब एक चीज देखो, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो इस फेस के लिए, फॉर फेस ए बी के लिए स्नेल्स लॉ क्या अगर अप्लाई करते हैं तो म्यू इज इक्वल टू व्हाट, साइन आई अपॉन साइन आर। अब एक चीज देखो, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम ही रहेगा उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, तो क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा, तभी तो ये चीज सेम रह जाएगी। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर इंक्रीज करेगा, यहाँ पे ध्यान दो, मीन्स यहाँ से देखो, अगर आई इंक्रीज कर रहा है ऊपर की तरफ तो आर भी इंक्रीज करेगा। अगर आर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे ध्यान दो, इस रिलेशन से आर डैश कितना हो जाएगा, ए माइनस आर। एंगल ऑफ प्रिज्म तो फिक्स है ना, जो एंगल ऑफ प्रिज्म है उस पर्टिकुलर प्रिज्म के लिए वो तो फिक्स रहेगा हमेशा। ठीक है, आर इंक्रीज कर रहा है, अगर आर इंक्रीज करेगा तो क्या आर डैश डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये तो फिक्स है। तो यहाँ पे हम क्या होगा कि जो आर डैश होगा वो डिक्रीज करेगा। जब आर डैश डिक्रीज करेगा, अब एसी फेस के लिए, फॉर एसी फेस, एसी फेस के लिए स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू साइन आर डैश अपॉन साइन आई डैश। अब एक चीज देखो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो सेम रहेगा, अभी हमने देखा कि आर डैश डिक्रीज करे, अगर आर डैश डिक्रीज करेगा तो क्या आई डैश भी डिक्रीज करेगा ना, तभी तो ये कांस्टेंट रहेगा। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आई डैश है, ये जो लाइन है वो कम डेविएट होगा। मीन्स अगर ये कम डेविएट होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ से देखो, ये कांस्टेंट हो गया एक पर्टिकुलर के लिए, ये कम हो रहा है तो ये कम नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते जाते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कम होता जाता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है, ये सपोज करो ये एंगल ऑफ डेविएशन है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे तो होता क्या है कि एंगल ऑफ डेविएशन पहले डिक्रीज करेगा, ठीक है, और एक पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू तक जाता है, उसके बाद फिर से इंक्रीज करना स्टार्ट करता है। वो इंक्रीज क्यों करता है, क्योंकि ये देखो ध्यान से, अगर ये रिलेशन में डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश, आई एक पर्टिकुलर लेवल तक आप इंक्रीज कर रहे हो, आई डैश उस हिसाब से डिक्रीज हो रहा है, अगर इन दोनों को इंटरचेंज भी कर दोगे तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स ये इसके अबाउट जो है, एक सेकंड, ये इस डेल्टा एम के अबाउट जो है सिमेट्री होता है। आप इधर से भी कम करोगे तो इसी वैल्यू पे आके रुकेगा, और इधर से बढ़ाओगे तो इसी वैल्यू पे आके रुकेगा। तो जनरली एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ओके, नाउ next is we are talking about the for small angle of prism.
ओके, तो एक चीज तो हमें पता लग गई कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो डिक्रीज करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ। फॉर्मूलाज क्या होते हैं वो हमें पता है, a इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश एंड डेल्टा प्लस a इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश। ओके, नाउ अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस काफी कम है उस केस में क्या होता है कि अगर ये एंगल जो है एंगल आई आर आर डैश और आई डैश ये काफी स्मॉल हो जाते हैं। मीन्स अगर साइन आई आपको लिखना है तो उसको आप आई लिख सकते हो, साइन आर लिखना है तो उसको आप साइन सॉरी आर के बराबर लिख सकते हो। देन फॉर फेस फॉर ए बी के लिए जो म्यू होगा वो कितना हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। लेकिन एंगल ऑफ प्रिज्म कम है जिसकी वजह से ये एंगल भी बहुत छोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है साइन आई जो है ऑलमोस्ट इक्वल टू आई अपॉन आर विच इज इक्वल टू म्यू आर। ठीक है, तो आई की वैल्यू म्यू आर हो जाएगी। वैसे ही फॉर एसी फेस के लिए म्यू की वैल्यू कितनी है, साइन आर डैश अपॉन साइन आई डैश। So this is almost equal to r dash upon I dash. Okay, sorry. Yeah, this relation I dash upon r dash I dash upon r dash. So this implies I dash is equal to mu r dash. ठीक है, दोनों फेस के लिए हमने लिख दिया। अब I और I dash की वैल्यू इसमें रख लेते हैं। देन डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू वॉट, I की जगह पे कितना है म्यू r प्लस म्यू r डैश विच इज इक्वल टू म्यू r प्लस r डैश। म्यू आर सॉरी आर प्लस आर डैश क्या है, ए है, देन म्यू इंटू ए। सो डेल्टा इज वॉट, म्यू माइनस वन इंटू ए। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन angle of deviation and the refractive index of this prism. Okay, so it means that if refractive index changes, this angle of deviation changes, and we know refractive index is different for different wavelength of light used. So generally this is the relation. Now our next topic is the dispersion of light. So our next topic is dispersion of light. Okay, dispersion of light. See, what is dispersion of light? See, as we know, light is an electromagnetic wave which consists of different regions like radio wave, microwave, visible region, infrared, X-rays, gamma rays. So generally we are talking about the visible region. That is, this is the electromagnetic wave, this is radio wave, microwave. We are talking about generally visible region. Visible region. Then this visible region is generally called, on combining, it is called white light region because it consists of 7 colors, that is the विबक्योर, जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं, विबक्योर। मीन्स ये रीजन जिसको व्हाइट लाइट रीजन भी कहा जाता है, इसमें 7 कंपोनेंट्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, वॉयलेट का वेवलेंथ कम होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब इस व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से हम पास कराते हैं तो ये जो व्हाइट लाइट है जिसमें 7 कंपोनेंट्स होते हैं, ये 7 कंपोनेंट्स में टूट जाते हैं। सो द स्प्लिटिंग ऑफ दिस व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड what, dispersion of white light. See, like this. This is the white light.
and let's suppose this is the screen with Gior. So this is the white light, this is prism. When a white light incident on a prism, it get splitted into its 7 component colors, and these colors when we obtained on a screen, this is called spectrum. ओके, अब रेड कलर कम डेविएट क्यों हुआ, वॉयलेट कलर ज्यादा डेविएट क्यों हुआ? क्योंकि अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था, एक रिलेशन और होता है, ध्यान दो, जो डेल्टा होता है ना वो म्यू माइनस 1 इंटू ए के बराबर होता है। मीन्स अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है तो डेविएशन भी कम होगा। एक रिलेशन होता है कॉची रिलेशन, कॉची एक रिलेशन होता है जिसको हम कहते हैं कॉची रिलेशन। वो जो है रिलेशन बताता है एंगल ऑफ डेविएशन और सॉरी refractive index or wavelength of light used, that is mu is equal to a plus b upon lambda square plus c upon lambda power 4. This is the relation where a, b, c are constant. It means that if the wavelength of light which we are using is of higher wavelength, then refractive index decreases and if refractive index decreases, then the angle of deviation also decreases. So for red light, this red light, the wavelength is very high or very large, so its refractive index become minimum, due to which its angle of deviation is also minimum. That's why it deviated less, while this violet light has longer wavelength, due to which shorter wavelength, due to which its refractive index is higher, and if refractive index is higher, then the angle of deviation is greater. Okay, so generally this dispersion of light occur because this different color has different speed when it enters into this prism, due to which some has higher speed, some has lower speed, due to which it deviated differently. Okay, now the last topic in this lecture is the angular dispersion and dispersive power. What is angular dispersion and what is dispersive power? Angular dispersion and dispersive power. Okay, see, as we know, this is a prism and the red light deviated least, that is this is the red light and this is the violet light. Okay, this is red, this is violet. If you, this is for del r and this is for del p. So angular dispersion is the deviation between the two extreme colors. विबग्योर में आखिरी मतलब एंड के कलर्स कौन से हैं, ध्यान दो तो, एक रेड है और वॉयलेट है, तो जो रेड और वॉयलेट के बीच में जो डेविएशन होगा उसको ही हम कहते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। ठीक है, तो रेड का डेविएशन तो डेल्टा आर है और इसको एक्सटेंड के पीछे की तरफ तो डेल भी निकल गया। ठीक है, तो डेल्टा आर कितना हो जाएगा, हमारे पास एक रिलेशन होता है डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि अलग अलग वेवलेंथ के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा। क्यों? इस रिलेशन से अभी जो मैंने लिखा था, अगर वेवलेंथ अलग है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा। तो डेल्टा आर अगर हम निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, म्यू आर माइनस 1 इंटू है, दिस इज म्यू इज द रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स फॉर रेड लाइट and del v is what, mu mu v minus 1 into a. So find out the difference between these two deviation, that is mu v minus mu r into a. So this is what we call the angular dispersion. Okay, this is what we call angular dispersion. Now dispersive power is just the ratio of this angular dispersion to the mean deviation. Dispersive power is denoted by omega,
that is omega is equal to what? Angular dispersion, that is del V minus del R upon delta is the mean deviation, so it is equal to mu V minus mu R into A upon mu minus 1 into A. This is the dispersive power and this is the angular dispersion. So that's all about the refraction through prism, and next lecture we start the next chapter, that is the wave optics. Thank you.